Okay, Assalamu alaikum students. Let's get started with IGCSE Physics, October November 2024, Paper 2, Variant 2. IGCSE Physics में Paper 2 is your MCQ का paper. This is a 45 minutes paper. Let's start with that. Okay, let's zoom in a bit. Two forces with magnitudes F1 and F2 act on object at right angles to each other. What is the magnitude of the resultant force? बेटा अगर दो फोर्सेस हैं जो राइट एंगल्स पे एक्ट कर रही हैं लाइक दिस, लेट्स से दिस इज F1 एंड लेट्स से दिस इज F2, इनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह निकालोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेस? दिस इज द टेल, दिस इज द हेड. You mark the resultant vector from the tail to the head. This is your resultant vector. How do you calculate the resultant vector? Simple, Pythagoras theorem. Resultant square is equals to F1 square plus F2 square taken under root. Resultant comes out to be what? F1 square plus F2 square. Any answers like that? A is your answer. Simple. Let's move on to question 2. A boy takes 30 minutes to cycle a distance of 8 kilometers. He then walks a further distance of 2 kilometers in 15 minutes. What is his average speed? बेटा आपने एवरेज स्पीड निकालनी है. हाउ विल यू कैलकुलेट दैट? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी योर टोटल डिस्टेंस? 8 + 2 दैट इज 10 किलोमीटर. टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 30 + 15 मिनट्स दैट इज 45 मिनट्स. देखो टोटल टाइम आपका क्या हो जाएगा बेटा? टोटल टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट? 30 + 15 दैट इज 45 मिनट्स. बट देयर इज अ प्रॉब्लम. एक मसला है. इन ऑल द फाइनल आंसर्स योर टाइम इज इन आवर्स. तो आपको इस मिनट को आवर्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. वेन एवर यू कन्वर्ट मिनट इन टू आवर्स, वट डू यू डू? डिवाइड बाई 60. 45 divided by 60 hours. This comes out to be 3/4 hours. डिवाइड कर दो 3/4 आवर्स से. What does your average speed comes out to be? 10 divided by 0.75. This comes out to be 13 kilometer per hour. D is your answer. Perfect. A small light ball is dropped from the top of a tall building. बेटा जब भी आपको इस तरह का वर्ड दिख जाए, टॉल, लार्ज, बिल्डिंग, इसका मतलब ये है that the examiner is talking about terminal velocity. जब भी आपको टॉल का कीवर्ड दिख जाए, लार्ज बिल्डिंग का कीवर्ड दिख जाए, that means the examiner is talking about terminal velocity. Which graph shows how the speed of the ball changes with time? Which out of them is a terminal velocity graph? See, the velocity increases, then it becomes constant. Terminal velocity graph. C is your answer. Let's further move ahead. Which statement about gravitational field strength is not correct? Which statement is not correct? It changes the mass of an object. Yeah, this is not correct. Gravitational field strength does not change the mass. It does not affect the mass. Okay. Three liquids PQR have different densities and do not mix. The liquids are placed in a measuring cylinder and allowed to settle. Perfect. A small block is then dropped into the measuring cylinder and comes to rest as shown. Okay. Which statement about the density of the block is correct? Perfect. अब हमेशा याद रखो, the liquids at the top have the least density. The liquids at the top have the least density. R has the least density. P has the greatest density. जो भी liquids bottom पे होंगे, the liquids at the bottom have the greatest density. The liquids at the top have the least density. The liquids in the middle have medium density. Simple. Now, what will happen? What will happen to this block? इस block की density क्या होगी? What will be the density of this block? We have to tell that.
Can you realize that the density of this block is greater than the density of R, and the density of the block is greater than the density of Q? Sir, how do you know that? Can you realize कि बॉक्स जो है या ब्लॉक जो है दैट हैज सिंक्ड, ये सिंक थ्रू कर गया है इन लिक्विड आर एंड लिक्विड क्यू। बेटा जब भी आपकी कोई चीज सिंक कर जाती है या बॉटम पे आ जाती है दैट मीन्स उसकी डेंसिटी अबव वाले लिक्विड से ग्रेटर है। द ब्लॉक हैज सिंक्ड थ्रू या ब्लॉक हैज अंडरग्राउंड आ गया है कंपेयर टू आर एंड क्यू, that means the density of block is greater than the density of R and Q. Any answers like that? The density of the block is greater than the density of R. C is your answer. अब यहां पे लिख लो एक की पॉइंट, एक दो की पॉइंट लिख लो। If the density of object is greater than the liquid, it sinks into the liquid. Second key point क्या लिखोगे बेटा? You will say if the density of object is less than the liquid, it floats on the liquid. Simple. अगर आपकी ब्लॉक की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से इट विल सिंक इनटू द लिक्विड। अगर आपकी ब्लॉक की डेंसिटी कम है कंपेयर टू द लिक्विड इट विल फ्लोट ऑन द लिक्विड। अब आ जाओ यहाँ पे द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बीम पिवेटेड एट इट्स सेंटर। द स्टूडेंट अप्लाइज टू फोर्सेस F1 and F2 as shown. Perfect. Which row is correct? Beta, can you realize this F2 will move the rod in the clockwise direction? Clockwise movement क्या हो जाएगा? Force F2 multiplied by the distance d4. Clockwise movement क्या आ गया? F2 d4. Can you further realize this F1 will generate what? Anti-clockwise movement. F1 into d3. क्या आंसर आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाएगा? F1 into d3. ऑप्शन ए एंड सी कैंसिल आउट। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बेटा क्या हो जाएगा? F1 into d3। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाएगा? F2 into d4। F2 into d4 का कोई ऑप्शन है क्लॉकवाइज में? यस, डी इज योर आंसर टू 6। आगे बढ़ते हैं। Which expression is used to determine the impulse on a tennis ball? Force into time. Impulse is always the force multiplied by the time for which the force is acting. Which law describes the process by which energy in the sun is released? कौन से process से energy release होती है in the sun? The process by which it is transferred to the earth and a way in which it is stored once it reaches the earth. बेटा एनर्जी रिलीज किस प्रोसेस के थ्रू होती है? फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। ऑप्शन ए को कैंसिल आउट कर दो। हाउ इज एनर्जी ट्रांसफर टू द अर्थ? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन सी को भी कैंसिल आउट कर दो। एंड वेयर इज द एनर्जी स्टोर्ड वंस इट रीचेस द अर्थ? इन फॉर्म ऑफ बायोफ्यूल्स। बेटा अर्थ पे हम सन की एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बायोफ्यूल्स स्टोर कर सकते हैं। डी इज योर आंसर। लेट्स फर्दर मूव अहेड। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? An object has a mass of this. It takes up stairs through a height of 4 meter. ठीक है. What is the increase in gravitational potential energy? How will you calculate the increase in gravitational potential energy? Easy. mg change in height. बच्चे मास क्या है? 20। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? 9.81। चेंज इन हाइट क्या है? 4। कैन यू कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? यस, 20 into 9.81 into 4. This comes out to be 785 joules. D
is your answer to question 9. इतनी easy है physics. Let's further move ahead. अच्छा, an electrician uses a lifting machine as shown. The lifting machine takes 4.5 seconds to lift the electrician a vertical height of 3.2 meters. ठीक है. The mass of the electrician is this. Perfect. The energy for lifting the machine is supplied by a 2 kilowatt electrical motor. You have to calculate the efficiency. बच्चे efficiency का formula याद है? Power output. या you can say like this. Efficiency का formula होता था energy output divided by the energy input. First of all, sir, how to calculate the energy output? Energy output कैसे निकालें? Can you realize this man of 72 kg has gained a height of 3.2 meters? Energy output क्या हो जाएगी? mgh. मास क्या है बेटे? 72 मेरे ख्याल है. Yes, 72. 72 is your mass. Gravitational field strength is 9.81. Height क्या है बेटा? 3.2. Can you calculate the increase in gravitational potential energy बेटा? जी बिल्कुल निकाला जा सकता है. The increase in gravitational potential energy is 2260 joules. This is your energy output. Now, sir, how to calculate energy input? Very easy. Energy input is equals to power input into time. Power input क्या है? 2 kilowatts. 2 into 10 is the power of 3. Time क्या है? 4.5 seconds. Can you calculate the energy input? हाँ जी. Can you calculate the energy input? Yes. That is 9,000 joules. Now, how are we going to calculate efficiency? Energy output divided by energy input. Output में क्या एनर्जी है भाई? 2260. इनपुट में क्या एनर्जी है? 9,000. 2260 divided by answer. This comes out to be 0.25 as your efficiency. B is your answer to question 10. क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो गया बेटा? बी. सिंपल. अब आगे बढ़ते हैं. Some altimeters use the change in pressure to measure the height. Okay. If the pressure is 100 kilopascal at sea level, what will be the pressure at the top of a hill 380 meters above? बेटा अगर आपका pressure at the sea level is 100 kilopascals, what will be the pressure at the top of a hill 380 meters above? Write down a key point. First of all, you will say, always remember, एयर का जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर always decreases with height. Air pressure always decreases with height. Perfect. Can you realize what will be the pressure if air is at a height of 380 meters? बेटा क्या आप चेंज इन प्रेशर निकाल सकते हो? लेट मी नॉट जूम आउट. Let me not zoom in, sorry. Can you calculate the change in pressure if you are at a height of 380 meters? Rho g change in height. Density क्या है? 1.3. Gravitational field strength क्या है? 9.81. Change in height क्या है बेटा? 830, sorry. Can you calculate the change in pressure here? 1.3, 9.81 into 830. This comes out to be 10585 pascals. अगर आप सी लेवल से टॉप ऑफ द हिल जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम द सी लेवल टू द टॉप ऑफ द हिल, दिस इज योर चेंज इन प्रेशर. But you don't have to calculate the change in pressure. You have to calculate the exact pressure at the top. Pressure at the top किस तरह निकालोगे? You know air pressure decreases with height. तो आप अपना सी लेवल वाला प्रेशर ले लो 100 किलो पास्कल्स minus the change in pressure. What does your answer comes out to be? हाँ जी, क्या आंसर आ गया? Your answer comes out to be 89,415. That is 89 kilo
pascals. आपकी टॉप साइड पे क्या प्रेशर आ गया भाई? 89 किलो pascals. How do you calculate the pressure on the top side? First of all, you calculate the change in pressure due to the gain in height. Change in pressure क्या आ गया? 10585. अब ये चेंज इन प्रेशर को आपने सी लेवल वाले प्रेशर से माइनस कर दिया. यू गेट द प्रेशर एट द टॉप, दैट इज 89 किलो पास्कल. ओके. वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड gases. In which state is the motion of the particles only vibrational? बेटा किस स्टेट में आपके मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज ओनली वाइब्रेशनल? ओनली द स्टेट ऑफ आइस. सिर्फ सॉलिड्स में आपकी मोशन वाइब्रेशनल होती है. ओके. A cube has a 2 meter long side. The cube contains a gas. This is very important. Gas है. At a pressure of 800 Newton meter square. Okay. The second cube has a side of length 4 meter long. The tube contains the same mass of the same gas as the first cube at the same temperature. Okay. The same temperature का word is important. What is the pressure of the gas in the second cube? बच्चे आपने प्रेशर ऑफ द गैस निकालना है इन द सेकेंड क्यूब. हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? आपको गिवन है कि गैस सेम टेम्परेचर पे रह रही है. whenever the gas is at same temperature we apply Boyle's law that state pressure is inversely proportional to volume. बेटा जब भी आपकी सेम टेम्परेचर पे गैस रहती है यू अप्लाई बॉयज लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. कैन यू रियलाइज द वॉल्यूम ऑफ दिस फर्स्ट क्यूबॉइड? क्यूब क्या होगा? 2 into 2 into 2, that is 8 meter cube. What will be the volume of the second cube? 4 into 4 into 4, that is 64 meter cube. बच्चे क्या आप रियलाइज कर रहे हो कि योर वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय व्हाट फैक्टर? बाय अ फैक्टर ऑफ 8. आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है बाय अ फैक्टर ऑफ 8. व्हाट विल हैपन टू योर प्रेशर? प्रेशर विल गेट डिवाइडेड बाय अ फैक्टर ऑफ 8. इनिशियल प्रेशर आपका क्या था? 8000. फाइनल प्रेशर आपका क्या हो जाएगा? प्रेशर इन द सेकंड बॉक्स क्या हो जाएगा? 8000 divided by 8, that is 1000. A is your answer. Which row describe the correct names for each change of state? Okay. गैस टू लिक्विड क्या होती है? कंडेंसेशन. इवेपोरेशन वाले ऑप्शंस कैंसिल कर दो. लिक्विड टू सॉलिड क्या होती है? सॉलिडिफिकेशन. बी इज योर आंसर. In an experiment to measure the specific heat capacity, a block of aluminum is heated and its temperature rises measured. The internal energy gained by the block is this. Perfect. The mass of the block is this. The rise in temperature is this. Which expression gives the specific heat capacity of aluminum? बच्चे do you remember Q is equals to mc delta T? हमने specific heat capacity निकालनी है Q divided by m delta T. Here your energy is represented by delta E. This should be your answer. C is your answer. Simple. Which statement about the transfer of thermal energy is correct? All metals, na. Convection can no. Convection occurs in solid, no. The radiation that transfers thermal energy is a type of electromagnetic radiation, yes. Beta, the radiation that transfers thermal energy is infrared radiation, which is a type of electromagnetic radiation. What is the number of wavefronts per second? Beta, number of wavefronts per second is what? The definition of frequency. The number of wavefronts per second that pass a fixed point is your frequency. B is your answer. Okay, आगे बढ़ते हैं. An earthquake under the ocean can produce a dangerous water wave called a tsunami. The table gives typical data for a tsunami. Okay, a student suggests three conclusions. Okay, the student is suggesting three conclusions. The deeper the ocean, the faster the wave. Is it true? अगर आपकी ओशन की डेप्थ ज़्यादा है तो क्या आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है? यस, दैट्स करेक्ट. कैन यू सी एट अ डेप्थ ऑफ 7000 meters you have a greater velocity? Yeah, that's correct. The longer the wavelength, the faster the wave.
This wave has a longer wavelength and it has a greater velocity as well. Yeah, that's correct as well. The faster the wave, the higher the frequency. I think we will have to calculate the frequencies as well here. How will we do that? The velocity v is equals to f लैंडा लगाओ. Velocity क्या है बेटा 948. Frequency हमें नहीं पता. Wavelength is 285. Frequency is what? 948 divided by 285. What does this comes out to be? 948 divided by 285. The frequency of the first wave comes out to be 3.3 hertz. Perfect. Second wave के लिए भी यही काम करो बेटा. Do the same thing for the second wave. V is equals to f lambda. Velocity क्या है भाई? 504. Wavelength हमें पता है. Yes, 151. Frequency comes out to be what? 504 divided by 151. Let's calculate this. This comes out to be 3.3 hertz. So that means even if the wave is getting faster, the frequency is remaining same. No effects. So only 1 and 2 will be correct. B is your answer. The diagram shows what happens to wavefronts at sea when they enter a harbor. तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? डिफ्रैक्शन का. A is your answer. A ray of light passes into the glass. Okay, what is the angle of incidence? Angle of incidence is the angle between the normal and the incident ray. This is your angle of incidence. The total angle is 90 degree. 90 is equals to 50 plus angle of incidence. Angle of incidence क्या आ जाएगा? 90 minus 50. Angle of incidence comes out to be 40 degree. A और B में से कोई ना कोई option होगा. What is your angle of refraction? 25. A is your answer. Simple. 21 पे आ जाओ बेटा. Okay. An object is placed in front of a converging lens. The lens has a focal length f. The lens produces a real enlarged image of the object. In which position is the object placed? बेटा किस पोजीशन में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया टू गेट एन enlarged image? हाँ जी. In which position should we place an object to get an enlarged image? Always remember that the object is placed between f and 2f to get an enlarged image. बेटा आप अपने ऑब्जेक्ट को जब फोकल पॉइंट f और 2f के बीच में प्लेस करोगे इन दिस रीजन यू विल गेट एन enlarged image. इस रीजन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है. दैट इज बी इज योर आंसर. What is the speed of the electromagnetic wave in a vacuum? 3 into 10 is the power of 8 meters per second. Analyze option C. यहाँ पे you have a kilometer. What does this mean? 30000 10 is the power of 3 meters per second. This is 3 into 10 is the power of 8 meters per second. Simple. The starter in an athletic race fires the starting piston. There is a wall 60 meters from the starter. Okay. Take the speed of sound as 330. How long after firing the pistol does the starter hear the echo of the sound from the wall? देखो बेटा आप echo कब hear करोगे? जब sound ऐसे जाएगा, hit back करेगा इस तरह. When will you hear an echo? When the sound travels 60 meters, hit the walls and then comes back. What is the total distance that you are traveling? 60 plus 60, that is equals to 120 meters. And what is the speed of sound? 330. The speed of sound क्या है? 330 meters per second. Can you calculate the time? Yes. Speed is equals to distance over time. Time को subject बना दो. Distance over speed. Distance क्या आ रहा है भाई? 120. Speed क्या आ रही है? 330. 120 divided by 330. This comes out to be what? 0.36 seconds. B is your answer. Simple. Let's further move ahead. The diagram shows the magnetic field around a conductor which is carrying current. Where is the strength of the field greatest? कहाँ पे strength of the field greatest है? The more closer you are to the wire, the greater will be your field strength. A is your answer.
आगे बढ़ते बेटा. A positive ion in a vacuum moves at a steady speed in a straight line. There is a potential difference between the two metal plates P and Q so that they are oppositely charged. When the positively charged ion enters the region between P and Q, it changes direction as shown. The diagram shows the view from above the ion. बेटा अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन इस प्लेट पे अट्रैक्ट हो रहा है दैट मीन्स दिस प्लेट विल बी नेगेटिवली चार्ज दिस प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट लाइक दिस कोई ऑप्शन है इस तरह का यस सी इज योर ऑप्शन सिंपल आगे बढ़ते हैं बेटा इन द सर्किट शोन द वोल्ट मीटर रीडिंग इज 2 द चार्ज इज 5 कूलम you have to calculate work done या फिर energy. How will you do that? Voltage is equals to work done over charge. Voltage क्या है 2, charge क्या है 5. 2 into 5 is equals to 10 joules is your work done. C is your answer. आगे बढ़ते हैं. The diagram shows the current voltage graph for a filament lamp. कौन सा ग्राफ करेक्ट है? Is A. Always remember the current versus voltage graph for a filament lamp is a decreasing curve. Okay. The diagram shows an electrical circuit. Which statement is correct? कौन सा statement correct है? The current reading on ammeter 1 is highest. I think this is correct. Why? क्योंकि अब आप अगर रियलाइज करो एमीटर 1 कहाँ है? एट द स्टार्टिंग पोजीशन लगा हुआ है. ये करंट I1 इस तरह से आएगा ऑन दिस जंक्शन. It will break up into two. Can you realize I1 is equals to what? I2 plus I3. I1 क्या होगा? Greatest होगा because it is a combination of what? I2 plus I3. A is your answer. Simple. Let's further move ahead. Which equation is used to calculate the combined resistance of the resistors? आप total resistance of the resistors किस तरह निकालोगे? If you want to calculate the total resistance of the resistor, take R1 plus इनका पैरेलल में भी रेजिस्टेंस निकाल लो. Calculate the total resistance of this parallel combination. Whenever two resistors are in parallel, how do you calculate the resistance? Product over sum. R2 into R3 divided by R2 plus R3. B is your answer here. Simple. An electrical engineer has made a pair of components P and Q. The resistance of P, achha, let's highlight this. The resistance of P decreases as the temperature rises, okay? The resistance of Q increases as the temperature rises. Perfect. The total resistance of P and Q remains constant, okay, when the temperature changes. Perfect. The two components are connected in series with a power source supplying a constant current, okay? Which statement is correct? कौन सा statement correct है? बेटा अगर आप रेजिस्टर P का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है. रेजिस्टर Q का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है. परफेक्ट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट हियर द टोटल रेजिस्टेंस of both the P and Q remains constant as the temperature changes. आप टेम्परेचर को ऊपर नीचे आगे पीछे ज़्यादा कम जो भी कर रहे हो टोटल रेजिस्टेंस इज रिमेनिंग कांस्टेंट. ओके परफेक्ट. Which statement is correct? If a temperature changes, this causes the difference between the potential difference across P and the potential difference across Q does not change. नहीं ऐसा भी नहीं होता. The potential difference across component P नहीं. The potential difference का sum of P and Q does not change with temperature. I think this is correct. Sir आप क्यों कह रहे हैं ये correct है? Do you remember that the total voltage in series is equals to current into the total resistance? बेटा आपकी total resistance of P and Q remains constant. Current भी constant है. So the total potential difference or the sum of potential difference between P and Q will also remain constant with changes in temperature. D is your answer. अब यहाँ पे आ जाओ. The diagram shows a wire XY
मूविंग अपवर्ड्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, वायर अपवर्ड मूव कर रहे हो इन अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट इज इंड्यूस्ड इन द वायर, परफेक्ट। द current carrying wire XY experiences a force because of its interaction with the magnetic field. Perfect. Which row describes the direction of induced current and the direction of force experienced by wire XY? देखो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। First of all, a current is induced in the wire. How will you calculate the direction of current? हाँ जी बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने के लिए कौन सा रूल लगाते थे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट फिंगर आपकी इस तरह आ गई, योर फोर्स और योर थंब पॉइंट्स अपवर्ड। राइट हैंड निकालो, फोर्स अपवर्ड पॉइंट करो, मैग्नेटिक फील्ड की फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स द राइट पॉइंट करो। You will realize that the second finger of current points like this. तो आपका करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? फ्रॉम एक्स टू वाई। ऑप्शन सी एंड डी कैंसिल आउट। नाउ आई वांट यू गाइस टू रीड the next statement very very carefully. The current carrying wire XY experience a force because of its interaction with the magnetic field. यहां पे कौन सा लॉ लगेगा? लेंसेज लॉ। बेटा जब आपके वायर में एक करंट इंड्यूस्ड हो गया, नाउ इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ, the force that you experience once a current is induced is always opposite to the force that initially caused the current. इसको लेंसेज लॉ को सिंपल अल्फाजों में अगर मैं कहूँ, Lenz's law says that the force experienced by the current carrying wire always opposes the motion causing it. अगर आप अपवर्ड फोर्स लगा रहे थे इनिशियली टू जनरेट अ इंड्यूस करंट, जब इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा तो उस पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड will be in the downward direction. A is your answer, basic Lenz's law. लेट मी ब्रेक इट डाउन फर्दर फॉर माई ऑडियंसेस, ठीक है? बेटा हमेशा याद रखो, जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो टू इंड्यूस अ करंट, जब करंट इंड्यूस हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग द इंड्यूस्ड करंट। जब भी जैसे आपने ऊपर की तरफ वायर को मूव किया टू इंड्यूस अ करंट, वंस द करंट इज जनरेटेड it will experience a downward force due to the magnetic field. I hope this makes sense. A is your answer to 31. This was the most technical question of this paper. अब यहाँ पे आ जाओ। Diagram 1 shows a magnet pushed into a coil that is connected to a center zero sensitive voltmeter. Perfect. Which row shows the direction of the pointer on the voltmeter when the magnet is as shown in diagram 2 and 3? बेटा जब आपका मैग्नेट एंटर कर रहा है योर रीडिंग इज टूवर्ड्स द लेफ्ट, दैट मीन्स जब मैग्नेट आउटवर्ड निकल रहा होगा तो रीडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी टूवर्ड द राइट। एनी आंसर लाइक दैट, या सी एंड डी में से कोई ऑप्शन होगा? ठीक है। अब बेटा ये मिडिल पॉइंट पे आपका एमीटर किस तरह पॉइंट करेगा? इन द सेंटर लाइक दिस। सी इज योर आंसर, सिंपल। आगे बढ़ते। What is the purpose of brushes and split ring commutators in a DC motor? To change the size of current? No. To keep the coil turning in the same direction. ये किस तरह होता है? By reversing the direction of current. अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते रहते हो the coil keeps on rotating in the same direction. Simple as that, nothing complicated. Let's move ahead. 34 पे आते हैं। इन विच डायरेक्शन विल द पार्टिकल्स बी डिफ्लेक्टेड? हमने फोर्स निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट
हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फर्स्ट फिंगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। बेटा करंट की फिंगर कहाँ पॉइंट करेगी? कैन यू रियलाइज बीटा पार्टिकल्स आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट? ऑलवेज रिमेंबर बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिव पार्टिकल्स. Current always points in the opposite direction to the negative particles. This is your direction of current. बेटा अपना लेफ्ट हैंड निकालो. You will notice that the force points out of the page like this. B is your answer. Alpha particle and beta particle have the same kinetic energy. Why does the alpha particle have a larger ionization effect than the beta particle as it passes through the air? First of all, alpha particle के पास चार्ज ज़्यादा होता है, तो सी एंड डी को कैंसिल कर दो. Since alpha particle has a larger charge, that's why it has a larger ionization effect. Also, alpha particles do have a smaller velocity. बेटा आपकी अल्फा और बीटा की काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, बट यू बेयर टू रियलाइज कि अल्फा पार्टिकल का मास जो है वो मच मच ग्रेटर है कंपेयर टू बीटा पार्टिकल्स. That means the velocity will be much much smaller for alpha particles. B is your answer. If you didn't get this relationship, let me show you one thing. Kinetic energy is equals to half mv square. All of us agree. Let's take 2 to the other side, mass in the denominator. 2 mass velocity square. क्या आप रियलाइज कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी सेम है? दिस विल गेट रिप्लेस बाय व्हाट? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन. 1/मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर. क्या आप रियलाइज कर सकते हो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मच ग्रेटर, मच 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 ग्रेटर कंपेयर टू द मास ऑफ बीटा पार्टिकल. हेंस अल्फा पार्टिकल्स की वेलोसिटी लेस होगी कंपेयर टू बीटा पार्टिकल्स. Hence, it remains closer to an air particle for a longer time. Hence, greater ionization effects. B is your answer. आगे आ जाओ. A student is carrying out an experiment to measure the radiation from a radioactive source. He uses a radiation detector and records the total counts in 5-minute intervals. He does this 3 times with the source present and 3 times with the source absent. Here are his results. Okay. What is the corrected count rate for the source? बेटा हमेशा याद रखो काउंट रेट का मतलब क्या होता है? काउंट्स इन 1 minute. काउंट रेट का मतलब क्या होता है? काउंट्स मेजर्ड इन 1 minute. ओके. तो आपके टोटल काउंट्स इन 5 minutes विदाउट द सोर्स प्रेजेंट पहले 68 थे, पे 25 हो गए. तो व्हाट इज द करेक्टेड काउंट रेट हियर? 43. 73 माइनस 28 क्या हो गया भाई? 45. 69 माइनस 22 क्या हो गया? 47. कैन यू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दिस? यप. 43 प्लस 45 प्लस 47 divided by 3, answer comes out to be 45. But this is for 5 minutes. आपने क्या निकालना है? 1 minute का काउंट रेट. व्हाट विल यू डू? 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू योर काउंट्स per minute. B is your answer. Simple. आगे बढ़ते. The count rate measure near a radioactive source drops from 542 counts per minute to 94 counts per minute in 12 hours. The background count remains at 30 counts per minute. What is the half life of the source? आपने half life निकालनी है. How will you do that? बच्चे आपका इनिशियल काउंट रेट क्या है? 542 minus 30. This comes out to be what? 512. ठीक है. Then it decays to 94. Okay. So 1/2 लाइफ के बाद ये क्या हो जाएगा? बेटा 1/2 लाइफ के बाद ये क्या हो जाएगा? 256. आफ्टर अनदर हाफ लाइफ ये क्या हो जाएगा? हाँ जी, 256 के बाद ये क्या हो जाएगा? 128. 128 के बाद बेटा ये क्या हो जाएगा? 64. 64 में अगर आप बैकग्राउंड रेडिएशन ऐड कर दो अगेन, दिस बिकम्स 94.
तो बेसिकली हो ये रहा है कि आप 542 से 94 जा रहे हो इन 12 आवर्स। बेटा जब आप 542 से 94 जा रहे हो, कितनी हाफ लाइफ से लैप्स हुई हैं? 1, 2, 3। 3 half-lives have undergone in 12 hours। एक हाफ लाइफ कितने आवर के इक्वल होगी? 4 hours। सी इज योर आंसर। When a protostar becomes a stable star, what happens? The inward force due to gravity is balanced by the outward force due to high temperature. B is your answer. Okay. The table gives information about some of the planets in our solar system. Which statement about these planets is correct? कौन सा statement about these planets is correct? हाँ जी. As the mass compared with Earth increases, the average density increases. ऐसा हो रहा है? नहीं. देखो मास कंपेयर्ड विद अर्थ इंक्रीज हुआ, एवरेज डेंसिटी गिर गई। दिस इंक्रीजेस, दिस डिक्रीजेस, नो दैट्स नॉट पॉसिबल। एज द मास कंपेयर्ड विद अर्थ इंक्रीजेस, द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। या बी इज योर आंसर। यहाँ पे आपका मास कंपेयर्ड विद अर्थ इंक्रीज हुआ, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई। यहाँ पे आपका मास कंपेयर्ड विद अर्थ डिक्रीज हुआ, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। दे आर मूविंग इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप। बी इज योर करेक्ट आंसर। Which quantity is an estimate of the age of the universe? Age of the universe is 1 over h naught. C is your answer. Simple. If you have any questions in the chat, you can ask right away.